Hey everyone, welcome back. If you're new here, so my name is Shikha and welcome to my channel. So as you know, I used to make makeup videos and tutorials and surely there is more chances to skin damage. So today I'm going to share my favorite and simple home remedy which will be very helpful for your skin as it was for me. So as you can see, I have makeup on my face, so we have to remove it first. तो उसके लिए मैंने बायोडर्मा का माइसेलर वाटर यूज़ करा है. आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. आई पुट द लिंक ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ टुडे. सो फेस वॉश करने से पहले माइसेलर वाटर से आपको अच्छे से अपना पूरा मेकअप क्लीन करना होगा. और अगर आपने मेकअप नहीं लगा रखा है और अगर आप बाहर से आए हो तो जितना भी डर्ट आपके फेस पे है उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा. तो यू शुड यूज माइसेलर वाटर एंड देन अ राइट फेस वॉश और क्लिंजर. सो एज यू कैन सी, आई जस्ट रिमूव द होल makeup from my face, and girls are complaining about pimples, acne and lots of problems having started with applying makeup. So just don't worry, it's a very common thing. But if you take care of your skin properly, then your skin will not be damaged. Next, I'm using a mild cleanser from the face shop. You can use any. और अगर आपको नहीं पता है तो I have a list, and if you want me to share, then please let me know. I'll make a separate video for all of you. Face wash and face cleansing is a very important step, क्योंकि अगर आपने अपना फेस ठीक से क्लीन नहीं किया और अगर आपके फेस के ऊपर डर्ट रह गई या फिर मेकअप रह गया तो जो भी हम मास्क यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर फेस प्रॉपरली. ऑलराइट, तो फेस वॉश करने के बाद में आई एम यूजिंग चिया सीड टोनर फ्रॉम फेस शॉप, एंड इफ यू डोंट हैव टोनर तो आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो और उसको सुखाने के लिए छोड़ देना है. एंड इट्स माई रिक्वेस्ट गाइस कि प्लीज़ ड्राई स्किन के ऊपर कभी भी फेस पैक नहीं लगाना है. सो दिस इज द प्रोसीजर टू यूज टोनर. Put a few drops of toner or gulab gel onto your palm and press them into your face. या फिर cotton pad में toner लेना है and then swipe it over your entire face and neck. So now it's time to make our simple but magical face pack, जिससे मुझे बहुत अच्छे results मिले हैं. So you just need 1 teaspoon besan, half tomato, half teaspoon aloe vera gel and few drops of gulab gel. Tomato helps to remove pimple marks, acne and also dead skin. It also helps to remove large pores and brighten up your complexion. Take all these ingredients and mix it well. Mix it properly so that your all ingredients can be mixed and make a good pack. So this is how our pack should be look like. So apply this pack all over your face. Besan helps to remove tan, exfoliate dead skin, helps to treat acne, reduce oiliness. So it will definitely good for oily skin. And best thing is that it gives you instant fairness. And aloe vera helps to fade out your dark spots, good for dry skin, sunburn, acne, pimples, irritation and inflammation. So aloe vera के बहुत सारे benefits हैं. मैं aloe vera को mostly मेरे सब face packs में use करती हूँ. After applying this face pack, just leave it for 15 minutes. Now you can see it's almost dry. और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको पूरी तरीके से ड्राई नहीं करेंगे, और अगर आपकी ऑयली स्किन है देन लेट देम ड्राई completely. After that you can wash your face with cold water or tap water. So I can already see a glow on my face. I'm just taking a sheet mask from the face shop. If you want this same sheet mask, then I just put it the link in the description box. अगर आपको sheet mask use नहीं करनी है तो you can also apply your favorite moisturizer. But for me, sheet mask is best. Because the serum in your sheet mask is filled with various vitamins and minerals. जब फेस वॉश करने के बाद में आपकी स्किन जब ड्राई हो जाएगी तो ये सीरम आपके फेस में easily absorb हो जाएगा. You can apply your favorite serum or moisturizer. So this is my skincare routine. तो मैं वो एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ. Then remove the sheet mask after 10 to 15 minutes. You can see a proper glow on my face. So उसके बाद में मैं थोड़ा मसाज करूँगी अपने पूरे फेस पे. Regular massage helps to increase blood circulation on your face, and better circulation is bound to give your face a healthy and fresh glow. Now I want to share some easy tips so you can enhance your health and beauty both. Now first of all, it's a very important step. Get your beauty sleep. Drink 8 to 10 glasses per day. Keep your makeup tools clean. Wash your face twice a day. Eat balanced and healthy diet. अगर आपका खाना सही होगा, अगर आपकी डाइट परफेक्ट होगी तो स्किन आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. Use oil free moisturizer. Don't skip sunscreen. Try to eat less junky and oily food, especially in summer. Eat antioxidant and vitamin C rich food.
So these are my personal favorite habits जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ और मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि it will definitely helpful for all of you. I hope this video is helpful for you and I've already shared lots of things जो कि मैं खुद follow करती हूँ. I hope you enjoyed this video and if you think that this video is helpful for you, so make sure to hit the like button on my today's video. And also subscribe my channel for more videos like this. And also hit the bell button too. I'll see you in my next video. Love you all guys. Bye bye.